प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS की सिलेबस के बारे में है। मैं इस वीडियो में CSS के ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों मज़ामीन की वजाहत करूंगा। हर मज़मून के कितने नंबर हैं और सब्जेक्ट्स कितने ग्रुप हैं। उम्मीदवार हर ग्रुप से कितने मज़ामीन सेलेक्ट कर सकता है। मुकम्मल कोर्स कंटेंट और की तजवीज़ करदा किताबों की तफसील से वजाहत की जाएगी। अगर वीडियो दिलचस्प है तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ ने तैयार की गई है। आप उसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछें। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS पाकिस्तान में बहुत से उम्मीदवारों की सबसे तरजीही ख्वाहिश है। ग्रेजुएट्स की एक बड़ी तादाद अपनी ग्रेजुएशन के बाद CSS की तैयारी करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में CSS के मुतअद्दिद मज़ामीन उन्हें इस बात में उलझा देते हैं कि क्या सेलेक्ट करना है और क्यों सेलेक्ट करना है। ये वीडियो हर इस चीज़ की वजाहत करेगा जो CSS के नए ख्वाहिशमंदों के जहन में उलझन पैदा करती है, जिसे वो CSS मज़मून के इंतखाब के पहले मरहले में बर्दाश्त करते हैं और एक अटेम्प्ट ज़ाकार देते हैं। CSS सिलेबस के मुताबिक CSS सिलेबस को दो बड़े कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है: कंपलसरी/लाज़मी और ऑप्शनल/इख्तियारी सब्जेक्ट्स। 6 लाज़मी और 6 इख्तियारी मज़ामीन हैं। इम्तिहान के रिटन पार्ट के 1200 नंबर होते हैं। हम इन दोनों कैटेगरीज़ की डिटेल्स को तफसील से बयान करेंगे। इन ग्रुप्स में CSS के सिलेबस से मुतालिक तमाम तफसीलात मौजूद हैं कि कौन सा लेना है, क्या एक ही ग्रुप से सेकंड सब्जेक्ट ले सकता हो या नहीं, सब्जेक्ट की डिटेल्स, कंटेंट क्या है। इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। अगर कभी कमी रहेगी तो पूछ ले, हम अवेलेबल हैं। कैंडिडेट्स को इस्लामिक स्टडीज़ और इलाकाई ज़बानों पश्तो, बलोची, सिंधी, फ़ारसी वगैरह के अलावा तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी ज़बान में अटेम्प्ट की ज़रूरत है। इस्लामिक स्टडीज़ ख़ास तौर पर उर्दू या इंग्लिश में करने की कोशिश की जा सकती है। ये उम्मीदवार पर मुनहसर है कि वो उर्दू या अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल हैं। गैर मुस्लिम उम्मीदवार तो इस्लामिक स्टडीज़ इंतखाब कर सकते हैं या उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स जैसा कि मुनासिब हो। लाजमी पर्चों में MCQs का रेशियो मज़मून के पेपर के अलावा हर पर्चे में 20 MCQs होंगे। इसी तरह हर ऑप्शनल पेपर से 20 MCQs होंगे, सिवाय प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS के सिलेबस के मुताबिक 200 नंबरों पर मुश्तमिल सब्जेक्ट 2 पेपर्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि 100 नंबरों पर मुश्तमिल मज़मून सिर्फ एक पेपर पर मुश्तमिल होता है। हर पेपर का दौरानिया 3 घंटे होता है। CSS कंपलसरी मज़ामीन। एस्पायरेंट्स के लिए CSS के कंपलसरी मज़ामीन लाजमी है, उनके अलावा कोई चारा नहीं है। कंपलसरी लाजिम मज़ामीन के 600 नंबर हैं। अब हम इन तमाम कंपलसरी मज़ामीन की वजाहत करेंगे। हर लाजमी मज़मून में 100 नंबर होते हैं। माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक CSS का सबसे मुश्किल मज़मून इंग्लिश ऐसे है। CSS में हर मज़मून के लिए अलग कोड नंबर होता है। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: एक इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स, 2 इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स, 3 जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स, 4 करंट अफेयर्स 100 मार्क्स, 5 पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स, 6 इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स 100 मार्क्स, टोटल 600 मार्क्स। ऑप्शनल मज़ामीन: CSS में मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुश्तमिल 7 होते हैं। एक एस्पिरेंट को उन ग्रुपों में बाकी 600 नंबर पूरे करने होते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन वाले ग्रुप हैं। एस्पिरेंट को एक ग्रुप से 200 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के पेपर की इजाज़त नहीं है। अब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 7 ग्रोहों की वजाहत करेंगे। ग्रुप 1 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 11 अकाउंटेंसी ऑडिटिंग 200 मार्क्स, 12 200 मार्क्स, 13 कंप्यूटर साइंस
200 मार्क्स। 14 पॉलिटिकल साइंस, 200 मार्क्स। 15 इंटरनेशनल रिलेशंस, 200 मार्क्स। ग्रुप 2 टू सेलेक्ट एक सब्जेक्ट अब 200 ए और 2 सब्जेक्ट्स अब 100 मार्क्स। यहाँ उम्मीदवारों को एक ऑप्शन दिया गया है, चाहे 100 नंबरों के 2 मज़ामीन सेलेक्ट करें या ग्रुप नंबर 2 से 200 नंबरों का एक मज़मून। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 16 फिजिक्स, 200 मार्क्स। 17 केमिस्ट्री, 200 मार्क्स। 18 अप्लाइड मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स। 19 प्योर मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स। 20 स्टैटिस्टिक्स, 100 मार्क्स। 21 जियोलॉजी, 100 मार्क्स। ग्रुप 3 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट अब 100 मार्क्स ओनली। आप ग्रुप नंबर 3 से 100 नंबरों का सिर्फ एक मज़मून सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 22 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 100 मार्क्स। 23 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 100 मार्क्स। 24 गवर्नेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, 100 मार्क्स। 25 टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट, 100 मार्क्स। ग्रुप 4 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट अब 100 मार्क्स ओनली। ग्रुप नंबर 4 से 100 नंबरों का सिर्फ एक मज़मून सेलेक्ट किया जा सकता है। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 26 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया, 100 मार्क्स। 27 इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर, 100 मार्क्स। 28 ब्रिटिश हिस्ट्री, 100 मार्क्स। 29 यूरोपियन हिस्ट्री, 100 मार्क्स। 30 हिस्ट्री ऑफ यूएसए, 100 मार्क्स। ग्रुप 5 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट अब 100 मार्क्स ओनली। आप ग्रुप नंबर 5 से 100 नंबरों का सिर्फ एक मज़मून सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 31 जेंडर स्टडीज, 100 मार्क्स। 32 इन्वायरमेंटल साइंसेस, 100 मार्क्स। 35 एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, 100 मार्क्स। 34 बॉटनी, 100 मार्क्स। 35 ज़ूलॉजी, 100 मार्क्स। 36 इंग्लिश लिटरेचर, 100 मार्क्स। 37 उर्दू लिटरेचर, 100 मार्क्स। ग्रुप 6 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट अब 100 मार्क्स ओनली। आप ग्रुप नंबर 6 से 100 नंबरों का सिर्फ एक मज़मून सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 38 लॉ, 100 मार्क्स। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 100 मार्क्स। 40 इंटरनेशनल लॉ, 100 मार्क्स। 41 मस्लिम लॉ जुरिस्प्रूडेंस, 100 मार्क्स। 42 मर्केंटाइल लॉ, 100 मार्क्स। 43 100 मार्क्स। 44 फ़िलासफ़ी, 100 मार्क्स। ग्रुप 7 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट अब 100 मार्क्स ओनली। यहाँ भी यही लागू होता है, तमाम मज़ामीन 100 नंबरों के हैं। अब ग्रुप से 100 नंबरों का सिर्फ एक मज़मून सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड नंबर सब्जेक्ट्स मार्क्स: 45 जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन, 100 मार्क्स। 46 साइकोलॉजी, 100 मार्क्स। 47 जियोग्राफी, 100 मार्क्स। 48 सोशियोलॉजी, 100 मार्क्स। 49 एंथ्रोपोलॉजी, 100 मार्क्स। 50 पंजाबी, 100 मार्क्स। 51 सिंधी, 100 मार्क्स। 52 पश्तो, 100 मार्क्स। 53 100 मार्क्स। 54 पर्शियन, 100 मार्क्स। 55 अरबिक, 100 मार्क्स। अब हम लाज़मी मज़ामीन पर बहुत तफसील से बात करेंगे। कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, तजवीज़ करदा किताबें और की तरफ से रीडिंग्स की वजाहत की जाएगी। इंग्लिश ऐसे उम्मीदवारों को अंग्रेज़ी में एक या ज़्यादा ऐसे लिखने की ज़रूरत होगी। मुख्तलिफ टॉपिक्स में से किसी एक पर मज़मून लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा।
कैंडिडेट्स से तवक्को की जाती है कि वो एक पर जामे और तहकीक पर मबनी इल्म की अक्कासी करे। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड एंड कंपोजिशन प्रिसस राइटिंग। इस मजमून में इम्तिहान एक पेपर पर मबनी होगा जिसमें 100 नंबर होंगे। प्रिसस राइटिंग, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जुमले को संभालने के लिए उम्मीदवार की सलाहियतें, स्ट्रक्चर, तर्जमा, ग्रामर और वोकैब्युलरी वगैरह। प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स। A careful selected passage with an orientation of generic and understanding and flexibility for compression shall be given for and suggesting an appropriate title. Out of the total 20 marks allocated to this question, 15 shall go to the text and 5 to suggesting the title. 2. Reading comprehension, 20 marks. A carefully selected passage that is rich in substance but very technical or shall be given, followed by 5 questions, each carrying 4 marks. 3. Grammar and vocabulary, 20 marks. Correct usage of tense or articles, prepositions, conjunctions, punctuation of phrasal verbs, and antonyms, etc. 4. Sentence correction, 10 marks. The sentences shall be given each having a clear structural flow in terms of grammar or punctuation. The candidates shall be asked to rewrite them with really needed correction, only without making unnecessary alterations. Number 2. A or more sentences should have exactly the same problem and 2-3 sentences shall be based on correction of punctuation. Marks. V. Grouping of words, 10 marks. A random list of 20 words of moderate standard, neither very easy utterly and familiar, shall be given to be grouped by the candidates in pairs of those having similar or opposite meaning as may be clearly directed in the question. 6. Pairs of words, 10 marks. 10 pairs shall be given of seemingly similar words with different meanings, generally confused in communication, for bringing out the difference in meaning of any 5 of them by first explaining them in parentheses and then using them in sentences. 6. 7. Translation, 10 marks. 10 short Urdu sentences involving structural composition, significant terms and figurative/idiomatic expressions shall be given to be accurately translated into English. Suggested books and readings. 1. English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press. 2. Practical English Usage, M. Swan, Oxford University Press. 3. The Little Brown Handbook, H. Ramsey Flower, Jane Aaron, The Little Brown Co. Harper Collins. 4. The University English Grammar R. Quirk, S. Greenbaum, Longmans. 5. Write Better or Speak Better, Reader's Digest Association. 6. A Modern English in Action, Henry Christ, D.C. Heath Co. General Science, Ability. General Science. I. Physical Sciences. Constituents and Structure, Universe, Galaxy of Light Year, Solar System, Sun, Earth or System of Units. Process of Nature, Solar and Lunar Eclipses, Rotation and Revolution of Weather. Variables, Global Temperature or Pressure, Circulation, Precipitation, Humidity, and Weather Variations. Natural Hazards and Disasters, Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami, Floods, Avalanche, Traveling Cyclone, Tropical Cyclone, Middle Latitude Cyclone, and Tornadoes, Drought, Wildfire, Urban Fire. Disaster Risk Management. Energy Resources, Sources of Energy, Renewable, LED energy, Solar energy, wind energy and energy conservation and its sustainable use. Atomic structure, chemical bonding, electromagnetic radiations. Modern materials/chemicals, ceramics, plastics or semiconductors. Antibiotics. Vaccines, fertilizers, pesticides. 2. Biological sciences. The basis of life,
cell structures and functions, subcellular organelles such as nucleus, mitochondria and ribosomes, biomolecules, proteins, lipids, carbohydrates and enzymes. Plant and Animal Kingdom, a brief survey of plant and animal kingdom to pinpoint similarities and diversities in nature. A brief account of human physiology. Common diseases and epidemics, polio, diarrhea, malaria, hepatitis, dengue. Their causes and prevention. No modern concept of producing biofuel method. 3. Environmental science. Environment, the atmosphere, layered structure and composition, hydrosphere. Water cycle, major water compartments, biosphere, major biomes, and lithosphere, minerals and rocks or rock types, plate tectonics. Atmospheric pollution, types or sources, causes and effects of major air pollutants, COx or particulate matter, SOx or tropospheric ozone, volatile organic compounds, dioxins. Regional and global air pollution issues, ozone depletion, greenhouse effect and global warming. International agreements on air pollution control, Montreal Protocol and Kyoto Protocol. Water pollution, types or sources, causes and effects of major water pollutants. Synthetic organic chemicals, oxygen-demanding wastes, plant nutrients, thermal pollution, infectious agents, sediments, radioactivity, heavy metals and acids. Drinking water quality and standards. Land pollution, solid waste management and disposal. Role of remote sensing and GIS in environmental science. Population planning. 4. Food science. Concept of balanced diet, vitamins, carbohydrates, protein, fats and all. Minerals, fiber. Quality of food, bioavailability of nutrients, appearance, texture of flavor, quality of packed and frozen food, food additives, preservatives and antioxidants. Food deterioration and its control, causes of food deterioration and adulteration. Food preservation. V. Information. Computer, hardware, software fundamentals, I/O processing and data. Stage, networking, internet standards, application and business software, social media, websites. Information systems. Fundamentals of artificial intelligence. Telecommunications, basics of wireless communication, mobile, satellite, surveillance and GPS and fiber optic, etc. General ability. 6. Quantitative ability/reasoning. Basic mathematical skills. Concepts and ability to reason quantitatively and solve problems in a quantitative setting. Basic arithmetic, algebra and geometry, average, ratios, rates, percentage, angles, triangles, sets, remainders, equations, symbols, rounding of numbers. Random sampling. 7. Logical reasoning and analytical reasoning/ability. Logical reasoning includes the process of using a rational, systematic series of steps based on signed mathematical procedures and given statements to arrive at a conclusion. Analytical reasoning/ability includes visualizing, articulating and solving both complex and complicated problems and concepts and making decisions that are sensible based on available information, including demonstration of the ability to apply logical thinking to gathering and analyzing information. 8. Mental abilities. Mental abilities scales that measure specific constructs such as verbal, mechanical or numerical and social ability. Suggested books and readings. 1. Asimov's New Guide to Science 1993 Isaac Asimov. 2. Science Restated, Physics and Chemistry for the 1970 Harold Gomez Cassidy. 3. Eminent Muslim Scientists 1991 S. Alam Naqvi. 4. Exploring Life Science 1975 Walter A. Thurber Robert E. Kilburn, Peter S. Howell.
5 एक्सप्लोरिंग फिजिकल साइंस 1977 वोल्टर ए थर्बर रॉबर्ट ई किल्बन पीटर एस हावल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एनामल बायोलॉजी 2011 लेंसलॉट हॉगबेन 7 द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी 2005 आइजक एजमाव एन 8 फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस 2010 मैक्स एम हाउक जे सीगल 9 फोरेंसिक साइंस फंडामेंटल्स इन्वेस्टिगेशन 2008 एंथनी जे 10 फिजिकल जियोग्राफी 2013 हार्म जे दत्त पीटर ओ मलर जेम्स ई बट जोसेफ ए मेसन 11 फिजिकल एंड सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन इन्वायरनमेंट 2009 एलन एच स्ट्रेलर आर्थर एन 12 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन 2005 ITL एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड 13 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 2014 केन सोसा FEAS 14 फंडामेंटल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस 2005 रॉजर एल फ्रीमन 15 बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंटल साइंस 2002 माइकल 16 फूड साइंस 1998 एन पॉटर जोसेफ एच हाचकिस 17 इन्वायरनमेंटल साइंस सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस 5 TH एड 2013 माइकल एल मकिनी रॉबर्ट शॉक एंड लोगन 18 इन्वायरनमेंटल साइंस ए ग्लोबल कंसर्न 2012 विलियम P कानिंगहैम बारबरा वुडवर्थ सेगो बुक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग 19 लॉजिकल रीजनिंग रॉब P डीग 20 एलिमेंट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जैन वॉन प्लेटो 21 रीजनिंग बिल्डन फॉर एडमिशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्टेप ऑफ रिसर्च एजुकेशन 22 टेस्ट ऑफ रीजनिंग थ्योर 23 मेंटर एबिलिटी DR लेल जेन 24 द ब्रेन बुक योर ओन माइंड एंड हाउ टू यूज इट एडगर थ्योर करंट अफेयर्स कैंडिडेट्स से तवक्को की जाएगी कि वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स और इस तरह के जनरल नॉलेज को डिस्प्ले करेंगे बैन अल-अक़वामी उमूर जैसा कि हालात हाज़िरा की तशरीह के लिए ज़रूरी समझा जाता है पाकिस्तान्स डोमेस्टिक अफेयर्स 20 मार्क्स पॉलिटिकल सोशल 2 पाकिस्तान्स एक्सटर्नल अफेयर्स 40 मार्क्स पाकिस्तान्स रिलेशंस विथ इट्स नेबर्स इंडिया चाइना अफगानिस्तान रशिया पाकिस्तान्स रिलेशंस विथ द मुस्लिम वर्ल्ड ईरान सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया टर्की Pakistan's relations with the United States. Pakistan's relations with regional and international organizations and ECO OIC WTO. 3 Global issues 40 marks. International security. International political. Human rights. Environment, global warming, the Kyoto Protocol, Copenhagen Accord. Population, world population trends or world population policies. Terrorism and counter-terrorism. Global energy politics. Nuclear proliferation and nuclear security. Nuclear politics in South Asia. International trade, Doha Development Round and Bali Package. Cooperation and competition in Arabian Sea, Indian and Pacific Oceans. Millennium Development Goals or current status. Globalization. Middle East crisis. Kashmir issue. Palestine issue. Suggested books and readings. 1 Pakistan Foreign Policy 1947-2005 Concise History 2011 Abdul 2 Issue in Pakistan's 2010 Akbar S. Zaidi 3 Pakistan A Hard Country 2012 Anatole Levin 4 Government Politics in South Asia 6 TH ed 2009 Baxter Malik Kennedy August 5 Introduction to International Political 2010 David Balam Bradford Dillman
6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड एडिशन 2012 फोल्कर बर्नहार्ड जेंगल एंड एंड्रेस क्राक 7 द एज ऑफ डिसेप्शन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इन ट्रेचरस टाइम्स 2011 मोहम्मद एल बाराडाई 8 इंटरनेशनल रिलेशंस 2012 जाशुआ गोल्डस्टीन 9 वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स और ट्रांसफॉर्मेशन 2014-2015 कैगली ब्लेंटन 10 पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस 2011 लोदी 11 ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन 2009 पॉल हर्स्ट 12 इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स इंस्टीट्यूशंस इन द ग्लोबल 2010 थॉमस ओटली 13 पॉलिटिक्स एंड चेंज इन द मिडल ईस्ट th एड पिर्सन 2012 एंडरसन साइबर्ट एंड वेगनर 14 ईटिंग ग्रेस द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बाम 2012 फराज खान 15 पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स अवार्ड पाकिस्तान अफेयर्स आइडियोलॉजी ऑफ एन इलुसिडेशन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स मुस्लिम रूल इन द इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रेनासांस मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स शेख अहमद शाह और साइद अहमद शहीद एलिगार देवबंद एंड अदर एजुकेशनल एंड कॉलेज पेशावर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल एंड क्वेड आई आजम मोहम्मद अली जिना 2 लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान जियोग्राफी और सोसाइटी नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड एजुकेशन विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स 3 पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल apparatus 4 न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल कंसर्न्स वी रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस mcqs and the role of Pakistan 6 relations in Pakistan 7 challenges in Pakistan 8 security threats in Pakistan role of actors 9 Pakistan's role in the region X the Palestine issue 11 changing security dynamics for Pakistan challenges to national security of Pakistan 12 political evolution since 1971 13 Pakistan and US war on terror 14 foreign policy of Pakistan post 9 November 15 evolution of democratic system in Pakistan 16 ethnic issues and national integration 17 hydropolitics water issues in domestic and regional context 18 Pakistan's national interest 19 challenges to sovereignty XX Pakistan's energy problems and their effects XXI Pakistan's relations with neighbors excluding India XXII Pakistan and India relations since 1947 XXIII the Kashmir issue XXIV the war in Afghanistan since 1979 and its impact on main challenges to Pakistan in the post 2014 era XXV proxy wars role of external elements XXVI conditions of Pakistan the most recent survey the previous and current budgets and the problems and performance of major sectors of XXVII the recent constitutional and legal debates the latest constitutional amendments and important legislations legal cases and the role of higher courts XXVII the prevailing social problems of Pakistan and the strategies to deal with them poverty education health and sanitation suggested books and readings 1 federalism and ethnic conflict regulation in India and Pakistan Edne Catherine New York Palgrave Macmillan 2007 Dove labor democratization and development in India and Pakistan Candland Christopher New York Routledge 2007
3. Perception, Politics and Security in South Asia, The Compound Crisis in 1990, शारी एट एल, न्यूयॉर्क, राउटलेज 2003. 4. द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कोअन स्टीवन पी, ETL, वॉशिंगटन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट प्रेस 2011. 5. फ्रंटलाइन पाकिस्तान, द स्ट्रगल विथ मिलिटेंट इस्लाम, हसीन जाहिद, न्यूयॉर्क, IB ट्रेस 2007. 6. मॉडर्न साउथ एशिया, हिस्ट्री कल्चर, पॉलिटिकल, जलाल आयशा एंड बोज, न्यूयॉर्क, राउटलेज 1998. 7. डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया, जलाल आयशा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1995. 8. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एन इंसाइक्लोपीडिया, लियोन पीटर, कैलिफोर्निया 2008. 9. बैक टू पाकिस्तान, ए 50-year जर्नी, मैस लेस्ली, लिमथ, रोमिन, लिटफील्ड पब्लिशर्स 2011. 10. जजिंग द स्टेट, कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, न्यूबर्ग, पॉला और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1995. 11. पाकिस्तान, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, कुरैशी, लंदन, एपिक प्रेस 2009. 12. पाकिस्तान, अमेरिका एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल जिहाद, रीडर ब्रूस, डेडली एम्ब्रेस, वॉशिंगटन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट प्रेस 2011. 13. कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर, स्कोफील्ड, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, IB 2003. 14. इस्लामिक लॉ एंड द लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, शाह ए, न्यूयॉर्क, राउटलेज 2011. 15. मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, शीख फरजाना, न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस 2009. 16. ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जेम्स, न्यूयॉर्क, इन्फोबिस पब्लिशिंग 2009. 17. पावरिंग पाकिस्तान, मीटिंग्स पाकिस्तान, एनर्जी नीड्स इन 21वीं सेंचुरी, रॉबर्ट M. हैथवे एंड माइकल. 18. पाकिस्तान's एनर्जी सेक्टर, फ्रॉम क्राइसिस टू द चेन, Z. इस्लामिक स्टडीज, I. इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ din in human life, difference between din and religion, distinctive aspects of Islam, Islamic beliefs, its impact on individual, society and the fundamental of Islam, Islamic worships, spiritual, moral and social impact. 2. Study of Seerah of the Prophet Muhammad as role model for individual, diplomat, educator, military strategist, peacemaker. 3. Human rights, status of women in Islam, human rights and status of women in Islam, dignity of men and women. 4. Islamic civilization and culture, meanings and the vital elements, role of civilization in development of human personality and community, of Islamic civilization, dignity of man, equality of social justice, moral values, tolerance, rule of law. B. Islam and the world, impact of Islamic civilization on the West and vice versa, the role of Islam in the modern world, Muslim world and the contemporary challenges, rise of extremism. 6. Public administration and governance in Islam, concept of public administration in Islam, guidance on good governance, concept of governance and its applications in the light of Sunnah and governance structure in Islam, legislation, sources of Islamic law,
Governance and impious. Particular letters of Umar are A and Ali are A to different authority. Responsibilities of civil servants. System of accountability in Islam. 7. Islamic Code of Life. Salient features of Islamic system: social system, political system, judicial system, administrative system. Procedure of an. Required books and readings. 1. Introduction to Islam Dr. Door Islam, its meaning and message Ahmad. 3. Islam, the misunderstood religion Muhammad. 4. Islam at the Muhammad Assad. 5. Islam and the challenge Amir Chapra. 6. A brief survey of Muslim science and culture M. Abdur Rahman. 7. Administrative development and Islamic perspective Muhammad. 8. Sciences Rahman. 9. Islamization of Pakistan Zafar Iqbal. 10. Islamic law and constitution A. Allah. 11. E Kamil Dr. Khalid Alvi. 12. Islami तहजीब के मुसाफ. 13. इस्लाम और की कैश Dr. मोहम्मद अमीन. 14. औरत और इस्लाम जमाल. 15. वाल आई शिबली. 16. Islam and Secular Mind edited by Tariq Jain. 17. A. Allah. Comparative study of major religions. I. Introduction. Definition S. of religion. Emergence of the study of religion as a discipline. Theological and academic study of religion. An overview of religious landscape of the world. 2. Hinduism. Historical background. Indus Valley Civilization and Aryan invasion theory, Vedic Dharma, Brahmanism. Scriptures. Smriti, Vedas, Upanishads, Manu, Sutras, great epics. Mahabharata. Hindu doctrines. Dharma, Vedanta, Karma, transmigration of souls, Moksha, liberation. Ways to liberation. Karma Marga, works/rituals, Marga, wisdom, Bhakti Marga, devotion. Hindu gods. Brahma, Vishnu, Shiva, Trimurti, other gods and divinities. Major Hindu sects. Manifestation avatars, supreme god, phallic worship. Goddess worship. Hindu society. Caste system, stages of life. Hinduism in the modern world. 19th century reform and revival movements, contemporary Hindu tendencies and movements. 3. Buddhism. Historical background. Life of Gautama Buddha, formation and spread of Buddhism, rivalry between Brahmanism and Buddhism. Scriptures. Vinaya. Teachings and doctrines. 3 jewels of Buddhism, Buddha, Sangha, the Four Truths, Eightfold Path. Buddhist sects. Theravada, Hinayana, Mahayana, other schools and sects. Buddhism in the modern world. 21. Revised scheme and syllabus for CSS competitive examination. 4. Judaism. A brief history of Jews and Judaism. From Abraham to Moses, peace be upon them all, from Moses to establishment of Jewish rule or destruction of Jerusalem and dispersion of Jews in the world. Jewish scriptures. The Torah, the prophets and the writings, Mishnah and Talmud. Articles of faith and basic teachings. 10 Commandments and the 13 Principles of Faith propounded by Moses Maimonides. 1-1-3-8-1-2-0-4. Jewish holidays and festivals. Yom Kippur, the Day of Atonement, Pesach, Passover, Sukkot, Tabernacles, Purim. Jewish worship. Daily prayer, fasting, Sabbath. Jewish sects and movements. Orthodox Judaism, Conservative Judaism, Reform Judaism, Zionism, Kabbalah. Weak Christianity. Historical background. Jewish background of Christianity or life and of Jesus Christ through the four Gospels, life. And the role of Paul through the letters of Paul, formation and spread of the Christian
Church or Christianization of the Roman Empire or Reform movement. Scriptures. The Holy Bible, Old Testament and New Testament. Basic doctrines. Original sin and incarnation of God, crucifixion and resurrection of Jesus Christ, atonement. Trinity. Christian sects. Catholicism, Eastern Orthodoxy or Protestantism. Lutherans or Reformed and Presbyterians or Anglicans or Baptists. Methodists, Unitarians. Christian festivals and holidays. Advent, Christmas, Easter or Pentecost. Christian worship and sacraments. Baptism, Eucharist, Communion, Lord's Supper, prayer, fasting, psalms, music. Christianity in the modern times. Encounter with modernity or modern theological trends, a missionary movement, dialogue and relationship with other religions. 6. Islam. Introduction and historical background. Islamic concept of religion, universality of religion and diversity of seerah, life of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, the era of rightly guided caliphs of Islam. 22. Revised scheme and syllabus for CSS competitive examination. Sacred scriptures. The Holy Quran, a Hadith. Basic doctrines and creed. Oneness of God, belief in prophets and finality of the with the Prophet Muhammad, belief in hereafter and the final reckoning by Allah the Almighty, belief in angels or previous scriptures of predestination and human responsibility before God, infallibility of the Quran. 5 Pillars of Islam. Utterance of, to proclaim the oneness of Allah and that Prophet Muhammad is his messenger. Salah, 5 daily prayers, zakah, compulsory charity, fasting in the month of Ramadan, and Hajj, pilgrimage to Mecca who can afford traveling to it. Other teachings of Islam. Equality of mankind, simplicity of spiritual purity and body hygiene, patience, contentment, moderation, social justice, jihad, tolerance towards other religions. Sects and schools. Sunnis, mainstream Muslims, special devotion for Ali and family of the Prophet, literalists, rationalists. Contemporary Islamic movements and tendencies. Muslim Brotherhood movement in Turkey, Iranian Revolution, extremist groups. Suggested books and readings. 8 Approaches to the study of religion. 1999. Peter, ed. Dove, The Penguin Handbook of Worlds. Living Religions, 2010. John R. ed. 3 के बड़े, Major Religions of the World. Hassan A.Z. 4 Hinduism, A Short Introduction, 2006. Klaus K. 5 Exploring Buddhism, 2012. Christmas Humphreys. 6 Judaism, A Short Introduction, 1999. Lavinia and Dan Cohn. 7 Christianity, An Introduction, 2006. Alistair E. McGrath. 8 The Messenger, The Meanings of the Life of Muhammad, 2008. Ik Ramadan. 9 Ideals and Realities of Islam, 1993. Hossein Nasr. 10 Terms and Understanding Islam, 1992. Syed Ala. CSS के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को मुख्तसर करने के लिए मैंने यहाँ इख्तियारी मज़ामीन शामिल नहीं किए हैं। इसी भी तरह अगर आप चाहें तो मैं इसे भी शेयर करूँगा। इसके अलावा मैं मुकम्मल रहनुमाई के लिए